Yes, students, it is my fourth video to describe, to explain small MCQ questions related with your further examination. Here in this NEET chemistry, my name is Arun Bhange from Parbhani, Maharashtra. Which of the following is optically active? Which of the following is optically active? It means that the concept is optically active. Concept is optically active. Optically active compound which rotates plane of the polarized light. Optical active compound must contain asymmetric carbon atom. जिस कंपाउंड में asymmetric carbon atom है उसी को आपको ऑब्जर्व करना है. What is the name of this compound? What is the nomenclature? It is different thing. But our question is focus on that question. Optically active. Here in this first part, this carbon is asymmetric. Means here the first part, second part, third part and fourth part, 4 different groups are connected to the carbon, so it is optically active. Optically active carbon containing compounds are asymmetric carbon containing compounds are optically active. Means dextro and levo rotatory. And here there is no optical active because CH3 and CH3, two similar CH3 is connected to this carbon, and one hydrogen and one OH. Is the structure is C bond H, OH, CH3, CH3. Means detailed structure of this. It is not asymmetric carbon. Similar methyl radicals are present at the carbon. Here also only OH, CH2 and CH3. Here also asymmetric carbon is not present. Asymmetric carbon, it is double bonded carbon is there. Here also asymmetric carbon is not there. Br, two Br same atoms are there. It is not asymmetric. It is double bonded carbon. It is not asymmetric. Here two asymmetric carbon atoms are there. One carbon and this carbon. This carbon consists of C2H5 ethyl, hydrogen, OH and the group H, C2H5 OH and the group. Means 4 different groups are connected to the carbon is asymmetric carbon. Here in this first answer, two asymmetric carbon atoms are there, so it is optically active. Okay. Yes, students. Next question in this journey, NEET examination questions. GOC is the chapter, General Organic Chemistry. In this General Organic Chemistry, one question. For this GOC, 1 or 2 questions are there. In this General Organic Chemistry, you must and these are all concepts related with different types of questions. So you must know such type of questions. Change in the state of hybridization. Change in the state of hybridization of the following asterisk carbon in the following reaction. This asterisk carbon CH3Cn, it is methyl cyanide, 2 CH3COH2 acetamide. Hydrolysis of this cyanide to acetamide. Cyanide to acetamide, then what type of change of hybridization takes place? Change of hybridization means CH3 C triple bond N converted into CH3 C double bond O bond NH2 amide group. This carbon is asterisk. तो उसको डॉट किया है आपने. तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन which is sp hybridized. Simple. Single bond carbon containing single bond sp3 hybridization. Carbon containing double bond sp2 hybridization. Carbon containing triple bond sp hybridization. It is sp hybridization. This sp hybridization and this hybridization is sp2. Answer is our C. Conversion.
means the reaction is going on. You are not the work to write how reaction takes place, but in this NEET examination, reaction which is taking place, which is written here, what type of applications are there, what type of knowledge according to our basic knowledge, this is the question. Okay, clear? Next question. Yes students, this is the question with respect to IUPAC name. It is not a simple IUPAC name. In this IUPAC name, this compound consists of one of the portion which is cyclopentane portion, another portion which is propane. Non-cyclic and cyclic combination is there. When non-cyclic and cyclic combination is there, you must count number of carbon atoms. Here carbon 1, 2, 3, 4, 5 carbons are there. Here 3 carbons are there. So 1,1-dimethyl cyclopentyl methane. No. You are taking the main chain methane, means this type of uncyclic compound you are taking. It is not correct. You must, the main chain must be that chain, part. Main chain means the main part is that part having more carbon atoms when cyclic and uncyclic combination is there. Here in cyclic part, more number of carbon atoms than this uncyclic part. So our cyclopentane is main. ये एंड होगा साइक्लोपेंटेन से, साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन, ये इथाइल होगा ना, ये इथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 methyl ethyl cyclopentane. It is 1 methyl ethyl cyclopentane. 1, ये first 1, 1 methyl ethyl cyclopentane. It is our cyclopentane part. The structure is, yes, I can write this structure. Yes, CH. It is CH-CH3. CH-CH3. CH-CH3 is the structure. And ethyl cyclopentane. It is one of the ethyl cyclopentane. Ethyl 1, at the first position of ethyl there is methyl, 1 methyl, means the position, main position of this is 1. This 1 is for cyclo part and this 1 is for ethyl part. Clear? मीन्स उसमें एक रेडिकल है, रेडिकल में भी नंबर है और ये साइक्लोपेंटेन में भी उसका फर्स्ट नंबर है, इसीलिए इन ब्रैकेट लिख के आपने लिखा इथाइल के फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, इथाइल के फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है और साइक्लोपेंटेन के फर्स्ट कार्बन पे ये सब लोग है, ये सब लोग है. इट इज़ द पार्ट. यस, इट इज़ IUPAC नेम. आंसर इज़ दिस, नॉट क्यूमीन. क्यूमीन के लिए बेंजीन रिंग चाहिए, यहाँ पर 2 साइक्लोपेंटिल प्रोपेन. इट इज़ नॉट करेक्ट. प्रोपेन, यू आर नॉट टेकिंग प्रोपेन. यू मस्ट टेक एंड with this cyclo part, with this cyclic part, because cyclic part contains more carbon atoms. Clear? Okay, chalo. Students, look that last portion. It is derivative of cyclopentane. Derivative of cyclopentane. On that cyclopentane part, ethyl is one of the radical. On the first carbon of ethyl, there is methyl radical. So 1 methyl is subgroup, sub-attachment, sub-substituent. Okay? Next question, which is coming now. It is also one of the simple question, simple part, in which case allylic carbon is not there. Allylic carbon means the carbon which is next to double bond. Carbon which is next to double bond. Next to double bond means carbon-carbon double bond is here. Next to double bonded carbon. The carbon which is attached to double bonded carbon is allylic carbon. Allylic carbon.
Here only one double bond is there, but allylic carbon is not there. Next carbon is not present. Here only single bond is there. There is no use at all. allylic carbon किस में है, किस में नहीं है. In which case allylic carbon is not there. तो आंसर होगा डी. ए और सी में नहीं है, बी में है, यहाँ पर है. allylic carbon is there. allylic carbon is present. allylic carbon is not present. allylic carbon is not present here also. Answer is A and C. Okay, very simple, but the concept is important. Allylic carbon, the carbon which is connected to double bond in alkene. Okay. Yes, another sweet question. सर सभी तो क्वेश्चंस वेरी सिंपल हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एमएसटी सीटी में आएंगे, या फिर उसका बेस होगा, नीट का कुछ बेस होगा. आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर आगे जाओगे तो बड़ा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा. यहाँ पर क्या है, विच इज हैविंग चिराल कार्बन इज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. विच इज हैविंग चिराल कार्बन. चिराल कार्बन it means asymmetric carbon. Chiral carbon means asymmetric carbon, and asymmetric carbon, the names are given to you. All names are IUPAC names. With respect to these names, we can conclude the structure, and with respect to that structure, we can get answer. Which is having chiral carbon is of the following compound. किसके पास चिराल कार्बन है, चिराल कार्बन किसके पास नहीं है, आपको देखना है. चिराल कार्बन वाले कंपाउंड एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा भी आंसर नीचे आएंगे. तो यहाँ पर आपको आंसर नहीं दिया तो चिराल कार्बन के लिए आपको आंसर आना चाहिए. एक ही आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो अगला आंसर नीचे दिया जाएगा. तो आंसर देखेंगे क्या है. 2-methyl butane, फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्यूटेन 1 2 3 4. सेकेंड पोजिशन फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड CH3. बाकी सारे हाइड्रोजन होते हैं, चिराल कार्बन तो नहीं है. ये कार्बन चिराल होने की संभावना थी. ये यहाँ पर CH3, अरे यहाँ पर CH3, ये CH3 सेम हो गए, कैंसल. चिराल कार्बन इज नॉट देयर इन द फर्स्ट कंपाउंड. 2-chloroButane देखेंगे. ब्यूटेन का मेन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स आर देयर, इट इज़ अ ब्यूटेन. And substitution of chloro in the second position, Cl. Here hydrogen is there, C2H5 CH3. It is CH3, it is C2H5, it is Cl, it is H. Yes, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये आंसर आपका हो सकता है. 2-chloroButane. Asteric carbon consists of 1 ethyl, 1 hydrogen, 1 Cl, 1 CH3. यस, ये हो सकता है. अभी तो अगले स्ट्रक्चर देखने के बाद बोल सकते हैं आप. ये होगा आपका ए स्ट्रक्चर, ये होगा आपका बी स्ट्रक्चर. यस, वी विल राइट दिस 2-methyl propane 1 2 3 2-methyl CH3. यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर H है. देर इज़ नो चिराल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी कैंसिल हुआ. 2-chloropropane देखेंगे. 2-chloropropane 1 2 3 2-chloropropane नहीं, ये भी फेल है. CH3 सेम CH3 ये सिमिलर है. सिमिलर radicals are there to this carbon, so it is not chiral carbon. तो आंसर इज बी. The structure is this. Hello, structure is this. 2-chlorobutane means सेकेंड पोजीशन पे ये 2 का 2 means it is CH2 CH3. This carbon is asymmetric carbon, chiral carbon. Okay, next question. Yes, these are last 3 questions of this video. Last 3 questions means so many questions are coming. Please like and some type of sharing if possible. Some type of सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे
वर्चुअली बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपसे बातचीत नहीं हो सकती, मेरा क्लास भी है, मेरे क्लास में बच्चे भी आते हैं. It is not a professional class, it is some type of to create interest in the chemistry subject and take so many types of knowledge. I have 35 years experience and I am Arun Bhange. It is in Parbhani place. Here I am in Parbhani place. Find out total number of alcohols by CH3, CH2, CH3. CH2, CH3, CH3 means replacement of OH group. After replacement of OH group, in the place of alkane, in the place of hydrogen of alkane, in the place of hydrogen of alcohol, alkane, how many alcohols are formed? How many alcohols are formed? These are, this is CH3, CH2. अगर ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3. It is the basic structure. If OH group is here, then it is one of the possible alcohol, here or here. And second alcohol is if OH group is at the central carbon, OH group is here, it is another isopropyl alcohol. This alcohol means it is a secondary alcohol and it is a primary alcohol. Possible structures are only two. Possible structures are only two. It is the answer. CH3, CH3, CH2, CH3. 1H of first carbon is replaced by OH. It is primary carbon. 1H of second carbon replaced by OH. It is secondary carbon. Answer is this. Clear? Next, CH3COOH on solidification is known as, जैसे आप सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हो, वो भी क्वेश्चन है ये यहाँ पर इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. CH3COOH on solidification known as, it is glacial acetic acid, not vinegar. It is a glacial acetic acid. Information based question है तो ये glacial acetic acid आप बोलोगे. Then peroxy acid, it is not correct. Only glacial acetic acid means आप उसको solidify करते हो acetic acid को. CH3COOH, it is acetic acid and acidic function group COOH group is present, and on solidification glacial acetic acid. Solid part के लिए nomenclature उसका, general name है उसका, perfectly lab name है उसका. In which case primary carbons are more. कहाँ पर प्राइमरी कार्बन ज़्यादा है? स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको समझ में आएगा. प्राइमरी कार्बन्स आर मोर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो एट फर्स्ट यू मस्ट ड्रॉ द कंपाउंड्स हियर. पहले आपको कंपाउंड लिखना पड़ेगा. कंपाउंड लिखने के लिए मैं ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऊपर के जो क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा साइड में करेंगे इसको. सिंपल क्वेश्चन के बाद आएगा थर्ड क्वेश्चन. GOC, running chapter is GOC, so many MCQs are there. How to solve it fastly, completely, कैसे solve करोगे आप? This 2-methyl butane, 1, 2, 3, 4, it is the structure of butane. At the second position it is CH3. How many primary carbons are there? Primary carbons are 1, 2. 2 primary carbons are there. It is secondary carbon, it is tertiary carbon. It is secondary carbon and tertiary carbon. 2-methyl butane having 2 primary carbon atoms, and 2-ethyl butane, 1, 2, 3, 4. Second ethyl, C2H5. Actually C2H5 1, 2, 3, 4, 5. ये 2-ethyl butane आप लिख सकते हो क्या? ये भी क्वेश्चन आपके सामने है. 2 कार्बन पे ब्यूटेन के सेकेंड पे अगर C2H5 आ गया, 1, 2, 3, 4, ये ब्यूटेन है. ब्यूटेन पे सेकेंड पे C2H5 आ गया. एक्चुअली द चेन इज 1, 2, 3, 4, 5. इट इज अ चेन ऑफ पेंटेन. द नेम इज समवॉट डाउटफुल. हियर हाउ मेनी, इफ यू आर टेकिंग लाइक दिस, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स आर देयर? आप देख सकते हो. 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4. ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4.
1 2 3 4, second CH3 and here CH3, 2 3 dimethyl butane, it is correct, having 1 and 1, 2 primary, in which case primary carbons are more. यहाँ पर भी 2 प्राइमरी कार्बन्स है, एक प्राइमरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन, यहाँ पर भी 2 3 डायमिथाइल में प्राइमरी कार्बन, 2 प्राइमरी कार्बन एटम्स आर देयर. हियर द नेम इज डाउटफुल, 2 इथाइल ब्यूटेन, द नेम इज डाउटफुल, मैं ये नहीं लूँगा, इसके बारे में देखेंगे. ब्यूटेन 1 2 3 4, ये ब्यूटेन. हियर प्राइमरी कार्बन्स आर 1 and 2, 1 and 2. Primary carbons are 1 and 2 and 2 3 dimethyl butane, 2 3 dimethyl butane, it is the structure. 2 3 dimethyl butane, यहाँ प्राइमरी कार्बन यहाँ पर भैया ना 1 2 3 4, यहाँ पर 4 प्राइमरी कार्बन आइटम्स है, नॉट 2. इट इज़ आल्सो प्राइमरी, इट इज़ आल्सो प्राइमरी. 1 2 3, इट इज़ आल्सो प्राइमरी. यहाँ पर 3 कार्बन आइटम्स है, ये मैं नहीं बोल रहा था आपको. ऐसा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समटाइम होलाटाइल. प्राइमरी कार्बन के लिए पूछा गया, मैंने जैसा ये काउंट किया आप भी वही काउंट कर सकते हो. तो हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन से आप देखोगे तो 1 2 3 4 प्राइमरी कार्बन्स आर देयर. दिस नेम इज़ नॉट करेक्ट. Here butane having 2 primary carbon atoms, 1 2, then 2 methyl butane 1 2 3. So answer is C. Answer is C. Okay, we will meet in the next video. जो भी है आपके सामने है, रॉ है, पका हुआ है, कुछ एक्सपर्ट है, कुछ बेसिक है, कुछ सिंपल है. अरुण भांगे, परभणी. थैंक यू.